Which of Please read. the following is entrusted with a statutory duty of laying down the standard of professional conduct and etiquette? Etiquette for advocates in India. What are the options? Hello. Hello. जी सर, आपकी आवाज आ रही। ये क्वेश्चन पढ़िए। Which आवाज नहीं of आ the रही। following is sorry sir. Which of the following is entrusted with a statutory duty of laying down the standard of professional conduct and etiquette for advocates in India? तो क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग, माने कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या एंटिटी है जिसमें प्रोफेशनल कंडक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट फॉर एडवोकेट्स इन इंडिया की जिम्मेदारी दी हुई है? क्या है ऑप्शन? मतलब माने रेगुलेट करना, बार सूची। क्या पढ़ाना, क्या अच्छा पढ़ना, कब खत्म खाना, कैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस, एडवोकेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस की जिम्मेदारी किसको दी है? बनाना और इसको इम्प्लीमेंट कराना। व्हाट आर द ऑप्शन? Bar Association of India, Bar Council of India, Delhi Bar Council, Supreme Court of India. So, what is the answer? Bar Association. Bar Council of India. Option is Bar Association of India. ठीक है, as per the answer he has given. Next. मतलब सर वो एडवोकेट्स को रेगुलेट करते क्या? एडवोकेट का कैसा करना, सिलेबस, क्या करना, लॉ कब का बैठना, सिलेबस कब क्या है, एलएलबी का अच्छा सिलेबस क्या रहना, और उन लोगों का कब एनरोलमेंट ओके करना, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट पूरा कौन डिसाइड करते? ये बॉडी डिसाइड करती। ठीक है, बार यस बार नेक्स्ट एसोसिएशन. क्वेश्चन. A person dying intestate means A person dying intestate intestate. माने INT, int estate. A person die intestate मतलब dying without property, dying without any legal head, died without sons, or died without executing a will. What is the answer? Answer is died without executing a will. वसीयत नहीं बना के गुजर गए तो क्या बोलते हैं? इंटेस्टेट. अच्छा समझ में आ रहा? जो वसीयत ओके सर. चाहे प्रॉपर्टी रहती, अब प्रॉपर्टी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होना, अगर जी हयात में अगर बना दिए तो नो प्रॉब्लम. एस्टेट, एस्टेट माने जमीन, इंट माने विदाउट, वसीयत नहीं बना के ही अगर गुजर गए तो क्या बोलते हैं लोग? इंट एस्टेट. समझ में आ रहा? लीगल वर्ड है. यस Okay, इंट sir. एस्टेट डाइड विदाउट Second एग्जीक्यूटिंग ए विल. नेक्स्ट क्वेश्चन. debenture holder of a company are the companies. डेबेंचर, डेबेंचर माने अगर कोई, देखो कोई कंपनी खोल रहे आप, या तो आप शेयर होल्डर बन सकते, या तो कंपनी को कर्जा दे सकते. समझ? अच्छा अगर मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, मैं आपको दो ऑफर दे सकती हूँ कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो और शेयर होल्डर बन जाओ. यस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस है तो लॉस शेयर कर लेंगे. एक रहता कर्जा देना, एक क्या रहता? कर्जा लेना.
मैं आपसे कर्जा ले रहा हूँ, तो आप मेरे लिए, मैं आपका कर्जेदार बन गया, और आप मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। ठीक है। जब आप किसी The को answer is मतलब A. यार इनके शेयर्स ले रहे थे। जब आपको कर्जा, कोई First, भी कर्जा दे रहे, उन लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और जो क्रेडिटर, कर्जा ले रहे उसको बोलते हैं डेटर। पेंशन, डिबेंचर, कर्जा, आपको कर्जा दिया, मैं चिट्ठी लिख के दे दूं कि इतना डिबेंचर मेरे पास है बोल के आपका, माने मैं जो कर्जा लिया आपको, उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। कंपनी क्या है, क्रेडिटर्स की खरीदार रहती। यस, शेयर्स नहीं, पैसा देती, कर्जा देते। जो भी कंपनियों को कर्जा दी उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। ठीक है। शेयर होल्डर अलग रहता। शेयर माने हिस्सेदारी, ये डिबेंचर माने कर्जेदारी। समझ आ रहा? यस सर। जी सर, ओके। नेक्स्ट, प्लीज रीड। Apostasy means कॉन्स्टिट्यूशन मतलब, ऑप्शन ए क्या है? renunciation of society, ऑप्शन बी। renunciation of religion, celibacy. तो एपोस्टेसी मीन्स, एपोस्टेसी क्या है, वर्ड है। एपोस्टेसी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए रिनंसिएशन। रिनंसिएशन माने गिव अप कर देना, समथिंग विच यू गिव अप, Give इसको बोलते हैं रिनंसिएशन। इट इज कॉल्ड एज renunciation. गिव अप, छोड़ देना। तो रिनंसिएशन ऑफ सोसाइटी तो नहीं होता, रिनंसिएशन ऑफ रिलीजन। समझ आ रहा? रिनंसिएशन माने छोड़ देना, कोई रिलीजन को छोड़ दे के दूसरे रिलीजन में जाना, तो उसको बोलते हैं एपोस्टेसी। समझ आ रहा? एपोस्टेसी किसको बोलते हैं? छोड़ देना। Renunciation of religion. अपने हाँ, मजहब को छोड़ देना। आप जो मजहब को फॉलो कर रहे हो वो उसको तर्क कर देना, इसको बोलते हैं एपोस्टेसी। समझ आ रहा? Yes, sir. नेक्स्ट, पढ़िए। A prerogative writs used to command a person or a public authority who is detaining another in custody to produce that person before the court is dash. तो क्या है? प्रिरोगेटिव यूज टू कमांड ए पर्सन, यूज टू command a person or a public authority who is detaining another custody। तो अगर कोई किडनैप कर लिए तो कौन सा रिट के लिए अप्लाई करते हैं आप? कौन सा रिट इशू कराते कोर्ट से? हाबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस। कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब है फाइंड द बॉडी, गेट द बॉडी, डेड आर लाइफ। The डेड body. और अलाइव। तो कोई किडनैप कर लिए तो उन लोगों को बोलना हेबियस कॉर्पस पिटीशन डालना बोलते। ठीक है। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन। By which constitutional amendment the voting age was reduced from 21st to 18 years. तो पहले क्या था, 51। वोटिंग एज कितनी थी? 21 ईयर्स था। हम्म। लेकिन राजीव गांधी के टाइम पे 21 साल को घटा के कितना बना दिए? 18 साल। 18 साल बना दी. तो कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? 61st amendment. 61st. 61st अमेंडमेंट 1988, ड्यूरिंग द राजीव Yes. गांधी टाइम, आफ्टर द डेथ ऑफ Yes. इंदिरा गांधी। ठीक है। तो Yes, sir. 61st अमेंडमेंट कब आया?
1988 61st 1988 में आया फर्स्ट अमेंडमेंट। तो कभी साल भी पूछ लेता या कभी कंटेंट पूछता, कौन से भी एंगल से पूछ सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। प्लीज रीड। United 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 Nations Conference on Trade and Development is headquartered at यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इट इज कॉल्ड एज यूनिटैड, UNCTAD। इसके हेडक्वार्टर्स किधर है? हेडक्वार्टर्स, यूनिटैड का हेडक्वार्टर्स किधर है? जेनीवा, नगर। यूनिटैड का हेडक्वार्टर्स किधर है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, so where is the headquarters of UNITAD, UNCTAD? Geneva, Switzerland. Geneva, Switzerland। Switzerland Next, please read। which High Court exercised jurisdiction over Lakshadweep? पहला Kerala. क्वेश्चन पढ़े थे Kerala High Court. केरला हाई कोर्ट। Kerala High Court. तो ये पहले पढ़ लिए थे अपन। Yes, sir. Yes, तो sir. विच हाई कोर्ट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन ओवर लक्षद्वीप? लक्षद्वीप कौन से ओशन में है? Arabian. अरेबियन सी। See, ठीक है, ओके, ये तो पहले पढ़ लिए थे अपन। तो लक्षद्वीप कौन से हाँ, हाई कोर्ट में आता? Kerala. Kerala High Court में केरला हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार कलकत्ता में। Calcutta में। पढ़िए। CEDAW is the acronyms of इसका एक्रोनिम है सीधा। acronym शॉर्ट फॉर्म, किसका शॉर्ट फॉर्म है? Convention on the elimination of all forms of discrimination against women। women क्या है? Convention on the on the elimination of all forms of discrimination against women, woman. इसको बोलते हैं सीडॉ। कन्वेंशन ऑफ नहीं है, कन्वेंशन ऑन है। अच्छा, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन also अगेंस्ट women. Women. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट Second option. वुमेन। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन। 2. नेक्स्ट, प्लीज रीड। Whoever commit or conspire to commit cyber terrorism shall be punishable with imprisonment, which may extend to dash under the Information Technology Act 2000. ये कानून का नाम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बोलते हैं। अगर कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करके क्या कर रहा, साइबर टेररिज्म कर रहा है, लोगों को धमका रहा, डर खौफ पैदा कर रहा है कंप्यूटर इस्तेमाल करके, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में क्या सजा है पूछ रहा हूँ। 10 साइबर, years की होंगी। ऑप्शन इज 1, जिंदगी भर की जेल। Life. तो कभी डरा है इंटरनेट पे किसी को? No. उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा होती अगर साइबर टेररिज्म करे तो। ठीक है, तो डराना बंद करे लोगों को। तो क्या है, कितनी सजा है? Imprisonment for life. इम्प्रिजनमेंट फॉर पूरी लाइफ। life. वेरी राइट। फिर कंप्यूटर दे देते हैं घर, जेल में यूज कर लेते बट। नेक्स्ट, The High Court in India do not possess हाई कोर्ट जो है, कितने हाई कोर्ट है अपने पास? 2. Supreme Court, High Court.
No. स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट Total high होते हैं, courts कितने है हाई कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट एक ही से रहता, हाई कोर्ट 22, कितने हैं? हमने 25 हाई or कोर्ट 22. हमने हाई कोर्ट ऑफ देर इन इंडिया। 24 देखो चतर के बोलो कितने हाई कोर्ट है? हमने हाई कोर्ट ऑफ 25 देर इन I इंडिया। think. So there are 25 high courts in India. There are 24 high courts Yes, sir. in India. अब 25. वो हाई कोर्ट को कौन सा जुरिडिक्शन नहीं 25. है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन माने पहला फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज हाई कोर्ट रहता Revisory. डायरेक्टली। अपीलेट माने जो Revisory अपील से judiciary. आता। मतलब क्या एडवाइजरी होता माने है? क्या बोले? मतलब हेलो, क्या चाहिए ओरिजिनल? ओरिजिनल मतलब डायरेक्टली उसी को जाता, हाई कोर्ट को जाता पहला केस। हमेशा क्या होता कि छोटे कोर्ट से आता ना, नीचे से। Yes, और sir. इस हाँ जी। पहले फर्स्ट फर्स्ट जब कोर्ट में जा रहे तो डायरेक्टली अगर हाई कोर्ट को जा रहे आप तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अच्छा। अपीलेट माने भाई अपील। छोटे कोर्ट से जब हाई कोर्ट में जाते हैं आप अपील करते हैं तो उसको बोलते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन। थर्ड क्या है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन। मतलब अगर गवर्नर चाह रहा कुछ ओपिनियन लेना तो ले सकते। फोर्थ क्या है? रिवाइजरी जुरिडिक्शन। फोर्थ इज रिवाइजरी जुरिडिक्शन माने अपने आप अपना जो डिसीजन दिए ना वो वापस ले लेने का, उसको बोलते हैं रिवाइजरी जुरिडिक्शन। अपने हाई कोर्ट के पास कौन सा अच्छा। जुरिडिक्शन नहीं है पूछ रहा हूँ? एडवाइजरी jurisdiction. एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं है। मतलब हाई कोर्ट से कोई भी एडवाइस नहीं ले सकते। अगर लेना है तो एडवाइस सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से ले सकते। जी सर, गवर्नर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला ना, ओके सर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिडिक्शन ले सकती है आर्टिकल नंबर 143 में। हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं है। मशवरा देने का, एडवाइजरी जुरिडिक्शन मतलब मशवरा देने का पावर। हाई कोर्ट के पास मशवरा देने का पावर नहीं है। समझा रहा? Yes, sir. जी सर। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास वो हक है अंदर अंडर आर्टिकल नंबर 143 में। ठीक है, Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। ओके। What is the name of the first Chief Justice of India? तो व्हाट इज नेम ऑफ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करंटली कौन है? हु इज करंटली, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? Sir, Revant Reddy. नो, चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ रहे आपको। रेवंत रेड्डी इज द चीफ मिनिस्टर। डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ इज द करंट जी इज द सर। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन कौन थे? एच जे कानिया। H.D. Kania. कौन है चीफ जस्टिस? फर्स्ट H.J. चीफ जस्टिस ऑफ Kania. इंडिया हेजे एच जे कानिया। कानिया। Kania. समझ आ रहा? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज एच जे कानिया। नेक्स्ट, ये क्या है? पैराग्राफ आता, पैराग्राफ पढ़ के तो आंसर देना। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ते आप लोग। प्लीज रीड द पैराग्राफ। The Indian Constitution provides for the right to equality. पूरा पढ़ना सर। पूरा पढ़ के 5 आंसर देना। अच्छा ओके। अच्छा। The Indian Constitution provides for the right to equality.
including equality before the law and equal protection of the law. These rights are enshrined in Article 14 of the Constitution and available to all citizens of India. In addition to the right to equality, the Constitution also provides for the other fundamental rights, such as the right to freedom of speech and expression, the right to life and liberty, and the right to freedom of religion. These rights are essential to the protection of individual liberties in India and are protected by the court. The Indian legal system is based on the common law principle, and the judiciary is independent and impartial. The Supreme Court of the India is the highest court in the land with the power to interpret the constitution and make the binding judgment on the matter of law. The Indian legal system also includes a wide range of statutory law such as the Indian Penal Code, which define criminal offences, and the Code of Civil Procedure, which governs civil litigation. These laws are enforced by the police and the court, and violation can result in criminal or civil penalties. Civil, criminal and civil penalty. तो पढ़ लिए, tell me the answer. क्या है आंसर? What are the rights enshrined in the Article 14 of the Indian Constitution? Right to Enshrined, equality, not enriched. enshrined, First answer. right to equality and equal protection law. Equality before law. So right to equality and equal protection Equal protection of law. of law दिया हुआ है अपने Constitution. Yes. Next. Who Please is read. entitled to the right to equality under the Indian Constitution? Option A, Every old person, all the citizens, only children, aliens. All the citizens. aliens. Aliens. All the citizens. Sorry, aliens. Aliens. तो अपना आंसर क्या है? राइट टू इक्वालिटी All किस चीज the को दे रहे? ऑल द citizens. ऑप्शन इज ट्रू. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. What is the basis of the Indian legal system? क्या है इंडियन लीगल सिस्टम का Common law बेसिस? principle. Common law principle. The basis is Common law common law Common law principle. principle. कॉमन लॉ माने जजमेंट लॉ. क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कॉमन लॉ का मतलब क्या है? कॉमन लॉ का मतलब है जज मेड लॉ. मतलब सुप्रीम कोर्ट से. उधर का इंग्लैंड के जो कोटा रहते, इंग्लैंड के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो ना कानून कैसा बनाते? जो भी जजा बोल दिए वो कानून बन जाता. उसको बोलते कॉमन लॉ. इंग्लैंड में समझ आ रहा? जी सर. उसको बोलते हैं कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the function of the Supreme Court of India? Only to judge the case, only to interpret the constitution, only to punish, to interpret the constitution and make binding judgment. मेक बाइंडिंग जजमेंट. फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट का Fourth is फंक्शन option. क्या है? कौन सा ऑप्शन है? Fourth option. फोर्थ ऑप्शन, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक बाइंडिंग जजमेंट्स. ठीक है. बाइंडिंग जजमेंट. बाइंडिंग जजमेंट माने अगर जजमेंट
जजमेंट माने अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया तो वो ऑल ओवर इंडिया फॉलो करना पड़ता, तो हाई कोर्ट टू जितने भी लोअर कोर्ट है सबको फॉलो करना पड़ता, इसको बोलते हैं बाइंडिंग। घर में घर के बड़े कोई जजमेंट के मुताबिक। जजमेंट को बताए, घर में अगर कोई बड़े हैं घर में तो जी बोल सर। दिए तो बस वो फॉलो करना हो, हम्म। to interpret the constitution and make binding judgments, बोलते काम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। सर ओनली टू पनिश, फिर किसका है सर नाम? पनिश करना, वो किसी का भी नहीं रहता होगा। पनिश पुलिस उसका क्या बोलते हैं, कोर्ट का काम है पनिशमेंट दी देना। मगर दूसरे पुलिस। काम भी रहते। मेजर फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? अब घर में आप लोगों का मेजर फंक्शन ओनली टू क्या है? पनिश नहीं है only। अब आप लोग घर में मेजर फंक्शन क्या है आप लोगों का? कपड़े धोना, वर्क बर्तन धोना। वर्क करना, होमवर्क। कल का होमवर्क क्या है? कल एक होमवर्क दिया था मेरे ख्याल से, हाँ, कल नहीं परसों। परसों जी दिया था, सर। कल भूल गया पूछना मैं। क्या था होमवर्क? एक्स्ट्रा इंडिया एडिशन, का एक्स्ट्रा एडिशन Tradition। इंडिया की कौन कौन से कंट्रीज के साथ है बोले, और कितने कंट्रीज के साथ? हाँ करे। हाँ करे, हाँ 48 कंट्रीज है, लेकिन 10 कंट्रीज के साथ ही इंडिया का एक्स्ट्राडिशन है। 10 कंट्रीज के साथ इंडिया का एक्स्ट्राडिशन है। तो आप लोगों का हाँ, काम क्या है? द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लॉ सेट? होमवर्क करना, पढ़ना, पनिश भी कोर्ट करता, लेकिन मेजर फंक्शन क्या है? समझा रहा? अब आपको बर्तन धोने का काम दिए तो मेजर काम क्या है? बर्तन धोना। इसका मतलब ये नहीं है ना खाना नहीं बनाना बोलते। यस। तो कोर्ट्स आल्सो पनिश। समझा रहा? क्लियर? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Indian judiciary is dash independent, impartial, dependent, independent and impartial. Fourth is the फोर्थ correct ऑप्शन। answer. इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड impartial. नेक्स्ट, फिर आ गया, प्लीज रीड। सर थोड़ा बड़ा करिए। क्लियर नहीं है ये। इधर से क्या ब्लर है? वो पीडीएफ में ब्लर है, ओके, दिख रहा? हाँ दिख रहा। जी सर दिखाई दे रहा पढ़ने से। पढ़िए। There is a segment of a people in society who advocates the repeal of motorcycle helmet law. The current helmet law saves hundreds of lives per year, and it is senseless that people should be injured or killed merely because they are too vain to wear a helmet. Furthermore, helmets law help to reduce public expenditure on the health care. One, one hardly need to appeal to statistics to show that helmet protect motorcycle cyclists against injury or death. For those who are skeptical, can refer to recent statistics. The available statistics are impossible to ignore. If motorcyclists wish to protect themselves against injury and death, they should wear a helmet whenever they ride. Many opponents of the helmet law agree that helmets save motorcyclists' lives, but insist that the decision to wear a helmet should be left to the individual rider.
Perhaps this कौन सी लाइन Third, थी चलेगी? third line, second line, perhaps. Perhaps this argument would be valid if motorcyclists were the only ones negatively affected by the decision. But this is not the case. Few studies reveal that only about half of all injured motorcyclists were properly insured, which means many of these riders likely relied on public funds to subsidize their healthcare costs. If the citizens choose to repeal the helmet law, we can expect these costs to rise significantly. Opponents of the helmet law offer two main arguments. First, the law's detractors argue that properly educating riders is the best way to avoid accidents. I agree entirely. All motorcycle riders should be properly educated and should ride their bikes responsibly. Some accidents, however, are unavoidable, and as it is it has been argued, helmets significantly reduce healthcare expenditures associated with all accidents. Second, opponents argue that helmet law infringe on their personal freedom. Again, it is agreed that the government should avoid constraining individual choice whenever possible. But as it has been shown, the decision to wear a helmet does not affect only the rider, so this issue is not a simple matter of individual liberty. In a perfect world, helmet laws would not be necessary because all riders would wear them voluntarily. However, we do not live in a perfect world. Therefore, we must require motorcyclists to make this socially responsible decision. Socially responsible decision. किसको Decision. किसको बाइक चलाने आती है इधर? चला कभी बाइक? स्कूटी आती. हेलमेट पहने ना पहने? पहने एक दो बार.